Okay, can you see my screen now? That's good. Yeah, if you remember from last lecture, we have started the chapter area where we have seen the area of parallelogram, area of rhombus, and area of trapezium. So anyone has any question or any doubt from last lecture? If no, then we can proceed. Area of triangle. So regarding area of triangle, we know that uh, for area of triangle is like base into height, right? So any triangle, if we know the base and the height, something like this. So this is the base and this is height, right? So we know that we can calculate the area. Now we'll see how to find a triangle if height is not given, but length of all three sides of the triangle are given. So there are three lengths given for the triangle ABC. Okay, so ABC are the lengths of side BC. So there is a formula which is derived here like semi-perimeter. Okay, sorry. Let us find the semi-perimeter of triangle. Semi-perimeter means what? Perimeter is like summation of all the sides. So that is A plus B plus C, right? So that is summation. And semi perimeter means what? This is perimeter, right? Summation of all the sides. And what is semi perimeter? It's half of this. So that is semi perimeter is half of all the addition of all the sides. So that is semi perimeter. So what is the area of triangle? This is Heron's formula. So he has derived from this. If only sides are given, then how to find the triangle area? So it is like semi-perimeter minus A, semi-perimeter minus B into semi-perimeter minus C. So this is product of all those subtraction into S. This is area of triangle. So if you know the only sides, you don't know the base and height, then you can calculate the area of triangle. Okay, so let's go ahead. So see, we'll see the exercise here. If the sides of triangle are 17 centimeter, 25 centimeter, and 26 centimeter, right? Then find the area of triangle. So here, how to find? We know the A, B, and C. Okay, so any value we can interchange between A, B, C. Means we can put A as a 26 also. So semi-perimeters becomes what? A plus B plus C by 2. So that is 17 into 25 plus 26 divided by 2. So it becomes 34. Now we know the area of triangle is under square root S, S minus A, S minus B, S minus C. So यहाँ क्या करना है? हमें ये जो सेमी पेरीमीटर निकाला है उसमें से हर एक लेंथ माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट, और उनका प्रोडक्ट लेना है, राइट? सो इस प्रकार से अगर हम ये कैरी आउट करेंगे subtraction, so 34 minus 17 becomes 17, 34 minus 25 become 9, and 34 minus 26 become 8, and product of all this, right?
So 17 into 2 into, why they have divided it? Because they want to carry out the square root, right? So they have divided this, not divided, but it is called, how can we take the fractions here? So 34 is nothing but 17 into 2. Similarly, 17. 9, we can make it like 3 into 3 factors. We are making the factors of that number, right? 3 into 3. 8 is 2 into 2 into 2. So why it is helpful? Because we can take, हम क्या कर सकते हैं इससे, कि जो दो दो है उसमें से हम एक ही लेंगे, राइट? या हमें पता है कि 17 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3, 2 स्क्वायर ऐसे पेयर बनाएंगे, राइट? 17 स्क्वायर, सिमिलरली ये 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ ये 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम स्क्वायर लिखेंगे तो अंडर स्क्वायर रूट हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करने में इजी होगी, राइट? सो 17 into 2 into 2 into 3 is become 204 square centimeter, because unit of for area or a side is given as centimeter, so area becomes square centimeter. ओके, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. Okay, so what exactly you could not understand? Because here, यहाँ क्या है कि तीन तीन भुजाएं या तीन साइड की लेंथ दी है, राइट? जैसे 17, 25, 26. अगर हम उनको ऐड कर देंगे तो इनका ये बन जाएगा, ऐड करके उनको डिवाइड बाय 2 करना है, तो क्या मिलेगा हमें? सेमी पेरीमीटर, राइट? तो सेमी पेरीमीटर में से हमें ईच साइड माइनस करनी है, जैसे s माइनस a, राइट? 34 माइनस 17, 34 माइनस 25 एंड 34 माइनस 26. तो ये क्या हो गया? इससे हमें कुछ वैल्यूज मिलेगी, 17, 9, 8, और सेमी पेरीमीटर भी हमें रखना है, जैसे s. हमें सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, ओके? s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. तो इस फॉर्मूला से हमें 34 इंटू 17 इंटू 9 इंटू 8 आ गया. अभी ये डिजिट को हमें स्क्वायर रूट निकालना है. तो अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बट एग्जाम में तो हमें कैलकुलेटर नहीं दिया जाता, राइट? सो वी हैव टू make the factors. So for 34, how to make a factors is like 17 into 2. For 17, there is no factor because that is prime number, right? So कोई भी I'm not sure how did you guys learn about making the factors, but generally take the number like prime numbers, right? We have to make the factors in terms of prime numbers, 2, 3, and 7, this way, okay, 11, 13. So we have to see that that number is divided into prime numbers, right? So these are the prime numbers, 17 to 7. So make this number as small as possible into terms of this prime number. So so from here we know that we can take the pairs of 17. Then for 2, this is the another pair, this is another pair, and this is another pair, right? So this way we can carry out the square root. I remember in June or July, we worked on this, that how to calculate the square root, right? So similarly, here we can make these pairs, and we know that 17 into 17 is nothing but 17 raised to 2. Similarly, 2 raised to 2 is square of 2.
then square of 2, square of 3. And if we carry out the square root, अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे, 17 स्क्वायर से 17 हो जाएगा, 2 स्क्वायर से 2 हो जाएगा, राइट. सो ये जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एरिया आ जाएगा. ओके. फिगर ऑफ प्लॉट एंड इट्स मेजर्स आर गिवन. अभी ये जो एक मतलब अगर हम हमारी गांव में खेती देखेंगे तो खेती इज फार्म होते हैं, तो फार्म इज नॉट इन रेगुलर शेप लाइक ट्रायंगल या रेक्टेंगल एग्जैक्टली, राइट. सो दे आर इन डिफरेंट शेप्स. सो ऐसे डिफरेंट शेप्स के लिए हाउ टू कैलकुलेट द एरिया, so we have to divide it into rectangle, triangle, trapezium, whatever the thing, and then we can carry out the calculate the area of each a specific shape, and then add those shapes. So this way generally we carry out the uh, area calculation for farmland or any irregular shapes. So similarly we have to see here. So here they have given the figure of plot, its measures. So what are the lengths they have given? LM is nothing but this 60, right? LN is nothing but 96. MN is 60 again. OP is 70. Okay. So what they have given here, we will see. In this figure, we get two triangles, right? So there are, we can see two triangles. So this is one triangle, and this is one triangle, right? So there are two triangles already, we can see. I know you may consider this as a third triangle, this one, but LON can be considered as one triangle because they have given the base and height. So we can directly calculate the area. So we have to see what is your final goal. So we are calculating the area, right? We are not calculating the hypotenuse or we are not calculating the some different stuff. So we are calculating the area. So we have to see the easiest solution. So for that, what is the solution? Like we have to consider this LON as a one triangle, right? LNO, and LMN is another triangle, that is yellow. That is in the form of yellow stripe lines. So हम इस जो येलो एरिया है यहाँ, तो यहाँ क्या क्या दिया है? What are the things given? 60, 60 and 96 is ln. So ये यहाँ से हम हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. और LNO दिस ट्रायंगल के लिए क्या है? सिंपली हम लोग LN और OP दिया है, सो बेस इनटू हाइट दिए हैं. सो इस प्रकार से हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. So let's see. First, we will try to solve with LMN. Okay. So LMN first calculate the semi-perimeter. 60 plus 60 plus 96 divided by 2. So we will get 108 is the semi-perimeter. So from semi-perimeter, we have to subtract each side, right, of that triangle, and then multiply by semi-perimeter itself. And then 108 into 48 into 48 into 12. So we can calculate the square root. So for square root, we know we made this is the one pair,
Then from 108, we can make the factors like 12 into 9 and 12. So from that, we will get area of 1728. Okay, so that is the one area. And for LNO, it is simple formula. यहाँ क्या है, half into base into height. So 1 by 2 into 96 into 70 and 96 into 35 become 3360. So area of quadrilateral LMNO. So पूरा जो भी प्लॉट दिया है उसका एरिया क्या है, दोनों ट्राइंगल का एडिशन. सो इस प्रकार से हम उसको ऐड कर देंगे तो ये एरिया हमें मिल जाएगा. सो एरिया ऑफ द प्लॉट LMNO इज 5088 स्क्वायर मीटर. सो यहाँ लेंथ मीटर में दी है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while giving the area unit, that is square meter. Okay, so now we know how to calculate the area of parallelogram, base into height, area of rhombus, half into product into length of diagonals, area of trapezium is equal to half into sum of length of parallel side into height. And if the sides of triangle ABC is given in the form of ABC length, okay, then we can calculate this area of triangle by using this formula. Okay, so these are the practice set. You can try this practice, try to solve these problems. And if you find any issue, you can ask me in next lecture. So it is pretty straightforward problems. So problem number 1, we can see the sides of triangles are given. We can use directly Heron formula. In calculating the quadrilateral PQRS, here are again 2 triangles are given. So here we can directly calculate base into height. And for this area, we may have to use the Heron's formula. But as side PR is not given, so we can calculate the side PR by using the Pythagoras theorem. Like we know this PSR is right angle triangle. So from that we can calculate the PR. So this area, let me use the shading. So this area we can calculate by using the Heron's formula, while this area we know directly we can calculate the base into height. Okay, so this way you can calculate the area of whole quadrilateral PQRS. Similarly for this triangle, again, like this is one triangle we can directly take because we know the base and height. And we can consider another triangle. This is also base into height. So these 2 triangles area we can calculate for these triangles, and we can add it. So now we will see the area of figures having irregular shape. Generally the plot, field, etc. are of the shape of irregular systems, right? So there are like different polygons are used. So generally plot, fields, etc. are of irregular shape, as we were discussing, right? हम discuss कर रहे थे कैसे plot, fields वगैरह irregular shapes के होते हैं. So हम उन्हें क्या करेंगे कि different polygons में divide करके each polygon का area calculate करेंगे, and then we can
add it, उनको ऐड कर देंगे. So जैसे अभी एक यहाँ एक फिगर दी है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इरेगुलर शेप्ड प्लॉट है. सो यहाँ अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है पूरे कोऑर्डिनेट या दिस पॉलीगॉन का, राइट, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेटर, दिस इज पॉलीगॉन. सो हम डिफरेंट डिफरेंट शेप में उसे डिवाइड कर देंगे. सो यहाँ देखिए ये है ट्राइंगल ए क्यू बी, राइट, दिस इज वन ट्राइंगल. Then ERD. ERD is another triangle. And then AQRE is, this is another quadrilateral, right? And BCD is nothing but another triangle. So if you calculate the area of this triangle and quadrilateral, then we can easily add those up to make the area of polygon. So I'm not going through the calculations because we have already covered how to calculate the area for triangle or quadrilateral. So similarly, we have to calculate the area of triangle as well as this quadrilateral from the formula which we have discussed in last lectures, and then we have to add those up. तो सिंपली इनको ऐड करना है, जो भी ट्राइंगल्स है या क्वाड्रिलेटरल्स है, तो उनका एरिया कैलकुलेट करके हमें उनको ऐड करना है. तो सी they have added like by calculating the area of each polygon, like triangle, quadrilateral, triangle and triangle, right? And this way we can calculate the area for any polygon. Similarly, practice sets में यहाँ ये problems दिए हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं. You can calculate the area of this triangle, then this as a quadrilateral, and again this is another triangle, right? And this is one big triangle. So if you calculate the area of this quadrilateral as well as triangle, then and add those up, then you can calculate the area for this polygon. In this figure also, figure number 2, here is one triangle, then this is another triangle, right? And you can, this is another triangle, right? So this way you can calculate the area for each triangle and add those up to calculate the area of this irregular shaped polygon. Okay, so they have given now the procedure to calculate the area of circle. तो area of circle कैसे calculate करते हैं? So draw a circle on a card sheet, right? So इस प्रकार से एक कार्ड शीट पे एक सर्कल निकाल लीजिए. Cut the circle from the sheet.
दिस सर्कल, ये सर्कल शीट में से निकाल लीजिए. So divide the circular paper into 16 or 32 equal parts. So इस छोटे छोटे parts को बना के 16 या 32 parts बना सकते हैं by paper folding to make 18 or 20 equal parts by dividing 360 in equal parts. Okay. So इस पेपर को ऐसा फोल्ड कर करके यहाँ से ऐसे एक एक पोर्शन निकाल लीजिए. राइट, 1 2 इस प्रकार से. Then get the sectors by cutting them along the radius. So एक एक पोर्शन हो गया या ये सेकेंड पोर्शन हो गया, उसे कट करके निकाल लीजिए. Then get the sectors by cutting them along the radius. Join all these sectors as shown in the figure. So अभी यहाँ 1 देखिए, ये 1 का पीस है और ये 2 का पीस है. So अगर हम इस प्रकार से ये कट कर लेंगे पूरे 16 parts, and if we join them in this fashion, तो 1 upside down and 2 is in opposite way, तो हमें इस प्रकार से एक शेप मिलेगा. We get nearly a rectangle. तो हमें क्या, एक almost rectangle मिल जाता है. So यहाँ as we go on increasing the number of parts of the circle, the shape of the figure is more and more like that of rectangle. तो अगर हम इनके नंबर ऑफ पार्ट्स अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा, समथिंग लाइक रेक्टेंगल. ओके. तो जनरली मतलब आई नो यू आर इन 8th स्टैंडर्ड्स, बट एज यू गो फॉरवर्ड लाइक 11th और 12th स्टैंडर्ड में, तो वहाँ भी अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो 11th 12th स्टैंडर्ड में हैं, सो आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाउ डू दे कैलकुलेट द एरिया जनरली फॉर वेरी इरेगुलर शेप्ड बॉडी, राइट, when there is no formula और ऐसे simple shapes नहीं होते, something like let me show you some example. Something, अगर ये ग्राफ है और इस ग्राफ में इस प्रकार से शेप्ड, और हमें ये एरिया निकालना है, कैलकुलेट करना है, राइट. सो how to calculate such type of areas? It's very difficult. So there is one way, there is one method called integration. Integration, right? I know this is not in your syllabus, but I'm just giving you the glimpse what you will learn in the future. आप आगे क्या जाके लर्न करोगे, तो ये इंटीग्रेशन एक मेथड है. तो उसमें क्या होता है, सो दे आर डूइंग सेम थिंग, दे आर टेकिंग स्मॉल पार्ट्स and then they are integrating. Means what? They are adding all those small parts, right? So that is called integration. So this is a similar strategy. Here we can see from the area of circle that how that integration is used. Okay. तो इज सिमिलर थिंग कि उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और सबको ऐड कर लीजिए. सो यहाँ भी वही हम कर रहे हैं, और हम यहाँ मतलब सर्कल्स का, सर्कल इज लाइक बिट रेगुलर शेप एंड वी कैन कैरी आउट दिस स्मॉल, मतलब हम कट कट करके उसको उसका एरिया निकाल सकते हैं या एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. बट सम वेरी इरेगुलर शेप्ड फंक्शंस होते हैं या इरेगुलर शेप्ड बॉडीज होती हैं, तो उनके एरियाज कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन जैसे मेथड्स यूज करते हैं. So circumference of circle, we know that 2 pi r, right? Circumference of circle means that is this length. Okay, if you start from here and if you learn run around this circle,
And if you come here, then the distance covered is nothing but 2 pi r. Okay. So, and we know that this is a 2 pi r, and we are dividing, and we are keeping in this fashion. So, length of this rectangle becomes pi r. This is half of that. Okay, and we know that this is r. So, if we do make this circle, we can directly say that pi r square, pi r. So, this, if we consider this as a rectangle, then this will become pi r into r, right? So pi r square is the formula for calculating the area of circle. So generally, where do we make a mistakes? Is like hum actually sometimes in exam they ask diameter. Sorry, they give the diameter. वो हमें देते हैं diameter, and they say to calculate the area. So what do? We directly take pi और वो d को directly use कर लेते हैं, and then it becomes, and then it affects a lot, right? So आपका area का calculation पूरा गलत हो जाएगा. So always uh, be cautious while calculating the area of circle in the exam. Check that what they have provided the information. Radius of circle, right? So they have given radius of circle, so we can directly use here pi r square. So we know pi value of pi is 22 by 7, so 21 square, right? So this goes 3, and we can calculate the area of circle. So अगर हम इसे, अगर ये diameter दिया होता, so it would have been problem, right? So उसको हम क्या करना है, diameter को 21 divided by 2. So always see that you are taking the radius for the calculating the formula of area of circle. Area of circle calculate करने के लिए हमेशा देखिए कि आप radius use कर रहे हैं. Okay. So similarly, in this formula, area of circular ground is 385 square meter, right? Find the radius of circular ground. So यहाँ उन्होंने क्या दिया है, area दिया है, and uh, they are specifying to calculate the radius of circle. So we know the area of circular ground is pi r square, and we know directly area. So from this calculation, we can calculate the r square as 1225. So यहाँ से directly हम r से r is equal to r square से r is equal to 35. So मेरे ख्याल से आपको जैसे टेबल होती है, जैसे 1 2 3 या 2 4 6 8, you know, so that table, so you may be knowing some tables of square also, right? Like 4 1 1, 2 is 4, 3 is 9, 4 is 16, 5 is 25, something like that. So so there are some techniques. I think there are like different techniques available. You can go to the online lectures. So for that purpose, um, like calculating the square root, right? So if you have given any number, how to calculate the square root? So there are methods which can give us the fastest way to calculate the square root. So so you can try to get those techniques, so that in future also, it's not for 8 maths exams, but
आगे जाके भी आपको उसका बहुत यूज होगा। ओके, so this is practice sets. You can go through that, and if you have any question, you can ask me any doubts. Okay. Yeah. See, there is another topic is find approximate area of irregular figures. Right. Area of irregular closed figure can be calculated approximately by using graph paper. So this is a graph paper. Okay. Draw an outline of the given piece of the object on the graph paper. हम इस graph paper पे इस object को calculate करते हैं और draw करते हैं. So how to calculate such type of stuff is how to calculate the area for such irregular shaped figure is now we will calculate the number of complete squares, right? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the complete squares. Okay. Then in the figure, number of parts having area more than half, right, square meter, but less than 1 square meter is equal to 11. So यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर मैं इसे शेड कर दूंगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पूरा रेक्टेंगल या पूरा स्क्वायर नहीं है, राइट? सो बट हाफ से ज्यादा है. सो वी विल कंसिडर ओनली दोज स्क्वायर विच इज मोर देन हाफ. यहाँ देखिए, यहाँ ये हाफ से ज्यादा नहीं है, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट. और ये भी देखिए, इट इज डिपेंड ऑन द अप्रोक्सीमेशन ओनली, राइट? ये देखिए, अगेन we are not considering this small part. We are considering the only square which are more than half. So such squares are 11. Area of those parts are 11 square centimeter. Okay. From the figure, number of parts having area is equal to half square centimeter is equal to 0. Exactly half ऐसे कोई नहीं है. So इनको कैसे calculate करते हैं? From the figure, we count the figure half square centimeter such as a part not to be considered. Area of these parts, मतलब इन्होंने क्या किया है, देखिए कि पहले तो एक कंप्लीट स्क्वायर ले लिया, राइट? कंप्लीट स्क्वायर्स. देन they have seen that area is larger than half square centimeter. मतलब जिस भी एरिया, जो भी एरिया है वो is half than the square. मतलब इस स्क्वायर में देखिए हाफ से ज्यादा एरिया है, सो हम वो कंसिडर करेंगे. देन दे हैव ट्राइड टू कंसिडर द एग्जैक्टली हाफ तो ऐसे कोई है नहीं, ठीक है. एंड लेस देन हाफ, तो लेस देन हाफ भी इन्होंने कंसिडर नहीं की. हैविंग लेस देन हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर सच पार्ट्स आर नॉट टू बी कंसिडर्ड. ओके. सो उन्होंने डायरेक्टली क्या किया, 13 into 11 is equal to 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट? सो इस प्रकार से उन्होंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया जितने भी स्क्वायर्स हैं. बट दिस इज नॉट द राइट वे, राइट? सो अगर हम इस स्क्वायर को और छोटे छोटे स्क्वायर बनाएंगे तो हमें और ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी. तो one way is like to draw this figure on the graph paper and carry out the calculation, or there are method like I already explained about integration, right? Not now, but in 11th 12th you will learn about those techniques and how to use integration.
तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो 11th 12th में पढ़ रहे हैं, या आपके भाई बहन, तो उनसे आप पूछ सकते हैं, मतलब जस्ट एज अ इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए। ओके, so activity: draw a circle of radius 28 millimeter, draw any one triangle and draw a trapezium on the graph paper. Find the area of these figures by counting the number of small squares on the graph paper. Verify your answers using the formula for uh, for area of these figures. So आपको इस ग्राफिकल मेथड को देखने के लिए आप एक ग्राफ पेपर पे, आपको पता है कि सर्कल, ट्राइंगल और पॉलीगॉन्स, जैसे हमने अभी पढ़े, ट्रेपेजियम, पैराग्राम और रोम्बस, राइट। सो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इस ये जो मेथड दी है, इस मेथड से आप उनका भी एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, और आपको अनदर वे इज लाइक यू नो द फॉर्मूला, सो ट्राई टू कंपेयर दो स्टफ. Uh, so this is again for information. Our nation has adopted the decimal system of measurement. So we go from a decimal system. So in the revenue department, area of the lands are recorded in the decimal units, are 1 R and hectare, right? So this way they calculate the area. So 100 square meter. So आप देख लीजिए कि 100 स्क्वायर मीटर मतलब 10 मीटर by 10 meter square. Okay, simply square. So 100 square meter is equal to 1 R, or 100 R ka becomes 1 hectare. That is nothing but 10,000 square meter. In practice, often area of land is measured in guntha or acre, right? You might have heard from our parents maybe in about land, right? 1 guntha or 1 acre. So 1 guntha is nothing but approximately, it's not similar, but approximately 1 R, and which is nearly 100 square meter. 1 acre, which is nearly 100 square meter, and 1 acre is nearly zero point 0.4 hectare. Okay, so that is generally approximate system, but if we go to the any our department, agricultural department, or any government uh, documents, you will find the R and hectares only. Okay, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, otherwise we will start with the new chapter, that is surface area and volume. That's good. So no doubt is good. If you have any queries or anything, you can, or if you can think of any other questions related to surface area, or sorry, area calculations, how to calculate area for such type of stuff, you can ask out of syllabus also. I will try to answer. Okay. So here we will start with the new chapter. Till now we were discussing about area, right? When we see the two-dimensional figure. So till now we were discussing with two-dimensional figures, maybe something like this area, sorry, square or rectangle, sorry, triangle or trapezium. So here we are just thinking of only two-dimensional figures. So what is mean by two-dimensional and three-dimensional? So इनको कुछ वॉल्यूम नहीं होता है, राइट? ये तो सिंपल पेपर है. सिंपल पेपर पे अगर आप कट करेंगे तो जो भी फिगर बनेगी वो टू डायमेंशनल होगी एक सिंपल पेपर पे. मतलब अगर आप और माइक्रोन लेवल में जाएंगे तो पेपर को भी थिकनेस है, बट हम उस पेपर को कंसिडर नहीं करते, पेपर की थिकनेस को, तो देन इट बिकम्स टू डायमेंशनल फिगर. वी आर नॉट कंसिडरिंग द पेपर थिकनेस हियर, राइट?
अगर वही कोई एक आप ब्लॉक ले लेंगे या अ, एक एक पेपर पे आप रेक्टेंगल निकाल के अगर ये देखेंगे तो आपको मतलब दिस थिकनेस इज नेग्लिजिबल, हम उसको कंसिडर नहीं करते। वही अगर हम बहुत सारे पेपर समथिंग 100 पेजेस अगर एक के साथ एक पीछे रख देंगे तो इट बिकम्स थिकनेस, देर इज थिकनेस, राइट। सो वो बन गई 3 डायमेंशनल फिगर। जब भी हम एक थिकनेस कंसिडर करते हैं देन इट बिकम 3 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि यहाँ और एक डायमेंशन जुड़ जाता है उसमें। यहाँ क्या है कि हम सिर्फ 2 डायमेंशन में काम करते हैं, जैसे एक्स और वाई, राइट। अगर ये फिगर बनानी है हम ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल के लिए क्या है कि हमें थिकनेस भी कंसिडर करना पड़ता है, जो ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें एक तीसरा डायमेंशन यूज करना पड़ता है, जैसे थिकनेस। ओके, तो हम सिंपल पेपर लेंगे तो उसका थिकनेस हम लोग अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो कोई कुछ भी नहीं, हमें दिखता ही नहीं है वहाँ। लेकिन वही अगर हम 100 पेजेस लगा देंगे एक के पीछे एक तो हमें वो थिकनेस दिखाई देगा, राइट। सो इसी प्रकार से अ, ये जो फिगर बनेगी तो वो 3 डायमेंशनल फिगर बनेगी। और ये अभी तक हम एरिया जो होता है सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी ये 3 डायमेंशनल फिगर फिगर तो बन गई है। अभी इसमें क्या है, आ, हमें सरफेस एरिया, तो यहाँ देखिए सिर्फ ये रेक्टेंगल नहीं है, तो इस साइड भी एरिया है, राइट। और यहाँ भी एरिया है, तो ये सरफेस एरिया है, राइट। तो हमें ये पूरे एरियाज को कैलकुलेट करना पड़ता है फॉर सरफेस एरिया। एंड अगर अगर ये रेक्टेंगल लेंगे, अगर एक पेज का हम रेक्टेंगल निकाल के ऐसा रख देंगे तो उसके थिकनेस में हम बहुत कम थिकनेस है। लेकिन ऐसे ही अगर आप 100 पेजेस लगा देंगे पीछे तो आपको एक ऐसे इस प्रकार से थिकनेस मिल जाएगा, राइट। सो ये 3 डायमेंशनल फिगर बन गई। तो इस प्रकार के 3 डायमेंशनल फिगर के लिए हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम जो अंदर मतलब वो जो 3 डायमेंशनल फिगर है वो जो पूरा ऑक्यूपाई करती है वॉल्यूम, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपल हम एक फिगर लेते हैं क्यूब, राइट। सो इस क्यूब में क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, सरफेस एरिया देखिए अभी यहाँ देखिए, तो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ, और यहाँ हाइट है स्मॉल। सो ये 3 डायमेंशनल फिगर आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ सॉरी, सरफेस एरिया क्या है, ये देखिए पहले हम लेंगे ये सरफेस एरिया एल इंटू बी, फिर से बी इंटू एच एंड एल इंटू एच, ये। तो ये similarly on other side also there is same area, so we are multiplying with 2. Okay, so for simple such type of structure we can calculate the surface area. अगर ये cuboid है exactly L is all dimensions are same like L, right? तो इस केस में क्या होगा, अगर ये बी एच पूरे मिल जाएंगे, राइट। सो एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल प्लस एल इंटू एल, सो इट बिकम्स 3L² और बाहर 2 है तो इसलिए ये 6L² बन गया। मतलब अगर ये बी एच और सॉरी बी एच और एच की जगह अगर हम एल लिख देते हैं तो हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपने अर्लियर स्टैंडर्ड में पढ़ा है या लास्ट स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा, राइट। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलर स्टफ फॉर अदर लाइक क्यूब और सिलेंडर, उनके वॉल्यूम्स कैसे निकालते हैं, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। तो ये अगर क्यूब है तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो हम वॉल्यूम से कैलकुलेट करते हैं। सो
these okay, let's learn cuboid, cube, cylinder, etc. are three-dimensional solid figures, right? These solid figures occupy some space. The measure of the space occupied by solid is called volume of solid. ओके, सो इस सॉलिड से जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है उसे, और या जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है, मतलब अब हमने एरिया का पढ़ा है कि स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इसका यूनिट क्या है? यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सच टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, राइट? हम विदाउट यूनिट तो बोल नहीं सकते। So what is unit for volume? So the cube with one side 1 centimeter, अगर ये देखा जाए तो 1 centimeter side है in adjoining figure, the space occupied by the cube is standard unit volume. So इसे हम unit volume कहते हैं. It is written as 1 cubic centimeter. Okay, so ये हम 1 cubic centimeter इस प्रकार से लिखते हैं, 1 cc cubic centimeter और 1 centimeter into raised to 3, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। सो ये हो गया हाउ टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो दे हैव गिवन द एक्टिविटी। सो ऐसे एक क्यूब बना लीजिए, गेट सम क्यूब्स इन दिस सिमिलर लाइक 1 centimeter by 1 centimeter by 1 centimeter एंड देन अरेंज इन दिस वे, राइट? सो ऐसे 6 को अगर हम रख देंगे, वी गेट अ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड बन गया, राइट? ऑफ लेंथ 3 centimeter, breadth 2 centimeter and height 1 centimeter. तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 3 into 2 into 1, राइट? हमें वॉल्यूम तो इसका लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, सो 6, बट 6 क्या? cc, बिकॉज वी नो दैट देर आर cubic centimeter, this is the unit. So whatever the we calculate, so we have to take it as a यूनिट, राइट? सो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सो 3 बार सेंटीमीटर हो गए तो क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया। So similarly, activity 2 is like length, breadth and height of adjoining cuboid is 3 centimeter, 2 centimeter and 2 centimeter respectively, right? So यहाँ calculate करेंगे कैसे? In this cuboid there are 12 cubes total, right? Of volume 1 cc each. तो ये एक जो क्यूब है वो है 1 cc का, तो इस प्रकार से 12 क्यूब है। यहाँ कितने थे? 6। सो यहाँ और हम अगर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, सो 3 into 2 into 2, it becomes 12, so it is nothing but 12 cc. ओके, सो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो यहाँ क्या कर दिया, देखिए इन एडजॉइनिंग फिगर 8 क्यूब्स लिए हमने और उनको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सिमिलर रखी 2 सेंटीमीटर। नोट अभी क्या होगा इनका एरिया, सॉरी वॉल्यूम, 2 into 2 into 2, that is 2 raised to 3, that is becomes 8 cc. Okay, और हमने 8 क्यूब भी यूज किए हैं। सो फॉर क्यूब स्पेसिफिकली अगर क्यूब है तो उसके लिए क्या है? फॉर्मूला वही है कि लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट। सो लेकिन यहाँ लेंथ, ब्रेड और हाइट सेम है, तो हम इसे डायरेक्टली L रेज टू 3 कर सकते हैं या L क्यूब। ओके, नाउ volume of liquid is space occupied by the liquid in container its volume. We know that the units of measuring the volume liquids are milliliter and liter. So generally जो liquids होते हैं तो हमने देखा होगा कि पानी के टैंकर्स होते हैं, राइट? सो दैट इज लिक्विड, बट इट इज स्टोर्ड इन दैट डिफरेंट शेप्ड कंटेनर, राइट? सो हमने अब वो ट्रक देखा होगा कि इस प्रकार से कुछ उनके कंटेनर होते हैं,
राइट। ये ट्रक होता है, ट्रक के कंटेनर उसमें अंदर पानी होता है, या हमारे लिए केरोसिन या रॉकेल यूज होते हैं, तो वो भी यहाँ से ट्रांसफर होते हैं। तो वो लिक्विड का वॉल्यूम भी इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो क्या है इसमें देखिए, लेकिन लिक्विड हमेशा आपको पता है कि आप जाएंगे तो अगर आप बोलेंगे लिक्विड मुझे 2 सीसी दे दो, तो कोई बोलेगा कि ये क्या है। या हमारे मिल्क भी, दूध भी होता है, तो वह वो किस यूनिट में यूज करते हैं, लीटर, राइट, मिलीलीटर और लीटर। तो हमें वो क्या है, कोरिलेशन देखना है। तो एन एम्प्टी क्यूब, ये देखिए एक एम्प्टी क्यूब है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब है। इट्स वॉल्यूम इज 10 × 10 × 10, सो 1000 cc, ये हो गया 1000 cc। इफ दिस क्यूब इज फिल्ड विद वाटर, तो ये पूरा एक, ये क्यूब है, हमने एक समझ लीजिए कि वाटर से भर दिया पूरा, राइट, नॉट हाफ फिल्ड, देन दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड 1 लीटर। सो इस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, 1 लीटर। सो 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर। ओके। सो कभी कभी हम दूध की जो थैलियाँ आती है वो 500 मिलीलीटर या 250 ml में आती है, राइट। सो अभी आपको अंदाजा होगा कि 250 ml कितना होता है या 500 ml कितना होता है। सो 1 लीटर इज नथिंग बट 1000 cc, राइट। सो अगर लिक्विड होता है तो हम लीटर कहते हैं। अगर वही लीटर को अगर हमें इस शेप में कन्वर्ट करना है तो उसे 1000 cc, okay, 1000 cc is nothing but 1 liter and is equal to 1000 ml. Hence 1 cc is nothing but 1 ml. So what volume of water filled in cube of साइड 1 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, अगर हम यहाँ क्यूबॉइड एक क्यूब निकालेंगे जिसकी साइड्स 1 सेंटीमीटर है हर तरफ से, तो उसे क्या कहेंगे, इसके अंदर कितना लिक्विड फिल है, 1 ml। ओके। तो इस प्रकार से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी शेप का, एंड देन वी कैन calculate the volume of liquid which is filled inside that container, or in that cube or in that cuboid. Okay, so इस प्रकार से हम लिक्विड का भी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट शेप का भी। सो दिस वे वी विल कंटिन्यू। Right now, I think time is up for us. Uh, then we will meet next time. Till then, take care. Have a great evening. Bye bye for now. Hey Ayush, can you drop from the class? Or can you hang up, please?